हाय, दिस इज काशी। वेलकम टू माय चैनल काशी होम डेकोर आइडिया। और आज का मेरा ट्यूटोरियल मिक्स मीडिया पे है और हमेशा की तरह आज भी यही कोशिश की है कि कुछ वेस्ट चीजों का अच्छा सा इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है कैनवास, आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, और ये बची हुई छोटी छोटी वेस्ट चीजें, बैंडेज क्लॉथ और ये स्टेंसिल। बची हुई चीजों को कैनवास पर चिपकाने से पहले रख कर देख लें। हैंडमेड पेपर को कैनवास पर इस तरह से चिपकाइए। कैनवास पर लगाई सभी चीजों की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसके बाद जेसो से पेंट कर दें। फ्रेंड, जेसो हम घर पर कैसे तैयार करेंगे इसका वीडियो मैं जल्दी ही तैयार करूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। रखकर टेक्सचर पेंट से टेक्सचर तैयार किया है। होममेड टेक्सचर पेंट का वीडियो भी जल्दी बनेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट टेक्सचर के लिए मैंने यहाँ यूज किया है चॉकलेट बॉक्स का कवर। बास्केट के नीचे का पार्ट, और ये है पिज्जा स्टैंड। काट के रिंग अलग कर लीजिए। और यहाँ निकाले हैं पुराने ड्राई फ्रूट के बॉक्स पर लगी कुछ एम्बलिशमेंट, और यहाँ लिया है माउथवाश। इसी से हम लेसेस को चिपकाना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम व्हाइट ग्लू लेते हैं तो बहुत थिक हो जाता है। माउथवाश घर में कैसे बनाया जाए इसका ट्यूटोरियल भी जल्दी ही बनाऊंगी। चिपकाने के बाद ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ना है। अब उन सभी चीजों पर जेसो से पेंट कर दीजिए। सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अब फोटो के आसपास के एम्बलिशमेंट को लगाना स्टार्ट करते हैं। हैवी एम्बलिशमेंट को लगाने के लिए मैंने यहाँ टेक्सचर पेस्ट का यूज किया है। मैंने एक गलती यहाँ की है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फोटो के आसपास लगाने वाले एम्बलिशमेंट को आप पहले से ही जेसो से पेंट कर लीजिएगा। इससे फोटो डैमेज होने का डर नहीं रहेगा।
छोड़िए। अब इसे जेसो से पेंट करिए। पूरी तरह सूखने के बाद अब बारी है पेंट करने की। यहाँ हम स्प्रे पेंट से पेंट करेंगे। इसका ट्यूटोरियल भी आने वाले वीडियो में दिया जाएगा। यहाँ मैंने लिया है येलो, रेड, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन कलर। अप्लाई करने से पहले हमको पहले कलर को पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ना है। और इसका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम इसे ड्रायर से भी सुखा सकते हैं। जगहों को ब्राउन स्प्रे पेंट से फ्लैट ब्रश की सहायता से टैप करते हुए पेंट किया है।
वाइट एक्रेलिक पर्ल कलर को लेकर हल्के हाथ से डिटेल्स को हाईलाइट किया है। इसके लिए ब्रश को डिटेलिंग करने से पहले स्पंज पर ड्राई किया है। आप ब्रश की जगह स्पंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार पूरी तरह से कलर सूखने के बाद हम इसमें स्टोन और बीड्स लगाएंगे। स्टोन लगने के बाद मेरा मिक्स मीडिया कैनवास अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये मिक्स मीडिया कैनवास वाला वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस तरह का और क्या सीखना चाहते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।